Good morning students, welcome to your EVS class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password, that is organ. What is organ? What is the meaning of organ? I want to tell you, हिंदी में इसका अर्थ है अंग या अवयव. Organs are parts of humans, animals or plants body that perform a particular work or task. It has another meaning also. Organ is a musical instrument. So why I have chosen this word as our password, I want to tell you. Students, today we will start our chapter number 5, how our body works. So this word is linked with this chapter that we are going to start from today. In this chapter we will study and discuss about organs. Now what we are going to do in our EVS class, first of all we will discuss the homework that was given to you during previous week. Last week I gave you the homework that you had to do preparation for your bookwork test of chapter number 1 that is scheduled today. So we will have a quick revision of chapter number 1. Next we will read page number 20 of our chapter number 5 that we are going to start from today. Last, after your EVS class is over, I will send you a worksheet. This is the test worksheet. You have to do this worksheet as your test. So, what we are going to do first of all, we will discuss our homework. Yes, students, your homework was to do preparation for the test of bookwork of chapter number 1 that is scheduled today. यानी जो आज टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपको रिवीजन करना था या प्रिपरेशन करना था. So this was our EVS homework that I gave you during previous week. So I am going to revise it quickly. Chapter 1, that is about me. It is about giving self information. My name is, here you can write your name. I am dash years old. You can write 6 or 7 years old. My address is, here you have to write your house address. The name of my school is, this is common among all, Delhi Public School Sirsa. I am in class second class is common, section can be very A or B. The name of my best friend is, here you will write your best friend's name. My birthday is on, आपका बर्थडे कब आता है यहाँ आपको वो लिखना है. Yes students, this is the second page of chapter number 1. Here you have to write my favorite. It means you have to write your favorite game, the name of the game here, the name of your favorite animal, the name of your favorite flower, the name of your favorite dish, the name of your favorite toy and the name of your favorite TV channel. So next is, can you do these? Write yes or no. Here are some activities. इनमें से आप जो कर सकते हैं या आपको करनी चाहिए या आपको नहीं करनी चाहिए वो उसके लिए आप yes और no लिखेंगे. Here, can you operate the computer? Yes. Can you draw a house? Yes. Can you throw rubbish into the dustbin? Yes. Can you ride a bicycle? Yes. Can you throw chair at someone? No, it should not be done. ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए. Can you play carrom board? Yes. Yes students, this is the third page and the last page of chapter number 1 about me. So here you have to draw happy face or sad face for each. Here you can see there are two children, they are talking to each other. They are talking about the task or work they can do or not. So he is saying I can comb my hair. So it is for you. अगर आप अपने बाल बना सकते हैं तो you will draw a smiley here so that this face can look happy. Drive a car, नहीं, ये कोई नहीं कर सकता है, आप बच्चे हैं. You are too small to drive a car, so you will draw a sad face. Can you sharpen your pencil? क्या आप अपनी पेंसिल शार्प कर सकते हैं? Yes, so you will draw a smiley. Can you ride a horse? No, it is not safe for you and you can't do that. So you will
draw a sad face. Can you polish your shoes? So ये आप कर सकते हैं, तो you will draw a smiley. और अगर आप नहीं कर सकते तो आपको सीखना चाहिए. So next is complete the invitation card. Here is a picture or pic of an invitation card. उसको आपको complete करना है. You have to write your own information in this card. Dear dash, here you will write your friend's name. Please come to my birthday party at my home on date of your birthday to be mentioned here. जब आपका बर्थडे आता है उस डेट को मेंशन करना है at dash pm. So when your party is going to start, किस समय शाम के आपकी पार्टी स्टार्ट होने जा रही है, you have to mention that time. And here you will write your name. So this is an invitation to your friend from you. ये आपके फ्रेंड को इन्विटेशन है आपकी तरफ से. Here you will write your friend's name. Here you will write your birth date. Here you will write the time. So and here you will write your name. So it can be complete. ये इन्विटेशन कार्ड ताकि कंप्लीट हो जाए. So that's all for our chapter 1 number 1 revision. So what we are going to do, students, first of all for talking about new work, that we will start our chapter number 5, how our body works today, and we will read one page of this chapter, that is chapter number 5, and then what we have to do, I will send you a test worksheet. As you know that today is test of bookwork of chapter number 1, then you have to do the test. So first of all we will move to the screen for our chapter number 5. Yes students, this is our chapter number 5 on page number 20 that we are going to start from today. Students, I am sure that you have taken out your EVS books. So open your EVS books at page number 20. This is our chapter number 5 and the name of the chapter is how our body works. How मतलब कैसे, our मतलब हमारा, body मतलब शरीर, works means काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, that we will discuss today in this chapter. Students, before I start, I want to tell you that few days ago I told you about a word machine. I told you on that day that what is a machine, because it was the password of that day. What is a machine? Any device or a thing that reduces human efforts and make our work easy to do, that is called machine. But do you know that our body is also called a machine? हमारे शरीर को भी एक मशीन कहा जाता है. बट आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. हमारा शरीर एक जीवित मशीन है. कुछ मशीन जो हम डेली यूज़ करते हैं दे आर नॉन लिविंग मशीन्स, बट आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. हमारा शरीर एक लिविंग मशीन है, जीवित मशीन है, जीता जागता मशीन है. वो कैसे है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. हमारा शरीर एक जीवित मशीन है. मशीन को हम हिंदी में मशीन भी बोल सकते हैं और यंत्र भी बोल सकते हैं. लिविंग मतलब अलाइव, अलाइव मतलब जीवित. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. ये हमारा शरीर है, ये एक लिविंग मशीन है, जीती जागती मशीन है. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. इट किसके लिए यूज़ किया गया है, आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी. सो आवर बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. टाइप्स मतलब तरह के, काइंड्स. ऑर्गन्स मतलब अंग और या अवयव. दैट इज़ आवर पासवर्ड फॉर टुडे, ऑर्गन्स. हमारे शरीर के 2 तरह के अंग या अवयव हैं या ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन का अर्थ है बाहरी अंग और इंटरनल ऑर्गन का अर्थ है आंतरिक अंग. ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं. सो ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर. हमारा शरीर एक जीवित मशीन है. हमारे
शरीर के दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज दैट कैन बी सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन या बाहरी अंग वो होते हैं जो देखे जा सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आप पहले से ही एक्सटर्नल मतलब बाहरी अंगों के बारे में जानते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल इट। Here you can see clearly students on page number 20 a picture is given here on page number 20. आपको इस पिक्चर को देखना है और उसको लेबल करना है। लेबल मीन्स यहाँ जो एरोज हैं उनके पास में उन ऑर्गन्स को देखकर उनके नेम लिखने हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, दैट इज हेड। हेयर यू कैन सी दिस इज हेड, तो उसके लिए हमने यहाँ पहले से ही हेड लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से हमें सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। दिस इज आई, दिस इज माउथ, दिस इज फिंगर, आप फिंगर्स भी लिख सकते हैं। दिस इज एल्बो, दिस इज स्टमक, दिस इज नी, नी घुटने को बोलते हैं। ये क्या है? टोज, पैरों में जो उंगलियां होती हैं उनको टोज बोलते हैं। नाउ एट द राइट साइड ये क्या है? हेयर। हेयर भी हमारी बॉडी का पार्ट है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में शामिल है। दिस इज ईयर, दिस इज नोज, दिस इज शोल्डर, दिस इज चेस्ट, दिस इज arm, this is hand, this is leg and this is foot. foot मतलब पैर, जिसका प्लूरल feet होता है। So I want to tell you that this was page number 20 that we have discussed. We will read up to page number 20, only this page only. Students, what we have done, we have discussed the homework that was given to you during previous week. The homework was that you had to revise for, or you had to do revision for our test that we will do today, test of bookwork of chapter number 1. And after that we discussed page number 20. Now what we are going to do, after this class students, I will send you a test worksheet that you have to do. If you are having printers available at your home, so then you can take a printout and do your test on that printout page only. But if you don't have printers, it doesn't matter. You have to write the answer of the test questions in your EVS copy. Simply you have to put headings, your name, date, test of chapter number 1, and you have to write the heading of the question, and then you can simply write the answers. So when you have to send your test back to me, you have been given 1 hour for doing the test. आपको 1 आवर में 60 मिनट्स में ये टेस्ट कंप्लीट करना है, और उस टेस्ट को कंप्लीट करके उसका पिक मुझे 60 मिनट्स के अंदर ही भेजना है। ईच एंड एवरी वन विल डू द टेस्ट और अटेम्प्ट फॉर द टेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर अवर EVS क्लास टुडे। वी हैव रीड पेज नंबर 20 ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5. नाउ take a little break and get ready for the test students. We will meet in our next EVS class. So best of luck for your test. Do your test neatly and nicely students.